Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. First few months, my college was in Hisar basically, and then for the weekend I used to go to Chandigarh. I started to devote more time in VRC, lesser time in quant because I was good at quants. Last के 6 months में मैंने काफ़ी अच्छे से प्रेप करना स्टार्ट किया. 3 घंटे एटलीस्ट मैं VRC पढ़ता था. अच्छा, वर्बल में कॉन्फिडेंस कैसे आया कि रीडिंग से आपको हेल्प हो रहा था, यू वर एबल टू अंडरस्टैंड पैसेजेस बेटर? जैसे टाइम पास होता है उसके साथ साथ लगता है रीडिंग में कि वर्बल में कि रीडिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर. Right, so hi everybody, welcome back to the Real Humans of B School, and today with us we have here Naveen, who's coming from IIM Ahmedabad, like one of the most amazing dream colleges that each one of us aspire to be a part of, but he's from this very niche, very well doing special program of FABM. So welcome on board, Naveen. Thank you Anisha. So tell me a little bit more about your entire preparation strategy. Like you're a boy who was very sincere, very simple, who's coming from Hindi medium and still in its first attempt got 99.6 in CAT. तो मतलब कैसे पढ़ाई करी थी, क्या करते थे आप? Basically, I started in the first few months. My college was in Hisar basically, and then for the weekend I used to go to Chandigarh for the weekend classes of CAT. And during those weekend classes, I got to know about the hard work that is required. I started preparation and I divided equal time for because I had different abilities in each of the sections. So I started to devote more time in VRC, lesser time in quant because I was good at quants. So उसके बाद same amount of time in VRC and in reasoning and less. 3 महीने तक तो यही शेड्यूल चला कि 4-5 घंटे रोज का हो गया, वीक में एक बार ब्रेक ले लिया. अच्छा, फिर लास्ट के 6 मंथ्स में मैंने काफी अच्छे से प्रेप करना स्टार्ट किया. 3 घंटे एटलीस्ट मैं VRC पढ़ता था. अच्छा. वेरियस basically I had no prior experience of reading. I started reading a lot, various articles, newspapers, novels, books, non-fictions, everything. And after I started practicing more of the quant part also. Okay. रीजनिंग की तो प्रैक्टिस ही है, बस जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना बेटर होता जाएगा. प्रैक्टिस ही है. वर्बल में कॉन्फिडेंस कैसे आया कि रीडिंग से आपको हेल्प हो रहा था, यू वर एबल टू अंडरस्टैंड पैसेजेस बेटर? या तो जल्दी से रिजल्ट तो नहीं दिखते हैं. जैसे आपने स्टार्ट किया रीडिंग तो एक टाइम पे लगता है कि एक हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गए, बट स्कोर मोर और लेस सेम ही था. या जब 2 महीने हो जाते हैं रीडिंग करते हो तब पता लगता है कि हाँ बेनिफिट है. एंड जैसे टाइम पास होता है उसके साथ साथ लगता है रीडिंग में कि वर्बल में कि रीडिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन आज चीज. सो उसके साथ साथ स्कोरिंग रीडिंग उसके साथ ही स्कोर इंप्रूव हुआ. ओके, सो दैट्स रियली गुड. और आपका इंटरव्यू कैसा हुआ था फिर नवीन, जब आपका FABM का इंटरव्यू था तो पर्सनल इंटरव्यू में कितने लोग थे एंड क्या पूछा था उन्होंने आपसे? इंटरव्यू मेरा काफी अच्छा हुआ था. इंटरव्यू के बाद आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं हो ही जाएगा मेरा टाइप्स. तो 2 प्रोफेसर्स थे, एक मेल एक फीमेल. तो first of all they started, where are you from? So I said Haryana. They asked me a couple of questions about Haryana. What are the things most famous about Haryana? And so I told them that army, agriculture and sports are the 3 most famous things in Haryana. So they asked me that what are you contributing in these fields. So I was a cadet of NCC at that time. So I was contributing somewhat to the army. Then I used to play basketball and volleyball in my college.
and I was an agriculture student. So I was basically linking all of my answers to my experience and my background. So that was the thing I think helped me very much during my interview. So after that, they went on like, why don't you go to the army, and why do you wanna pursue agribusiness or FABM?